Assalamu alaikum. Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. My name is Atif Nawaz. I welcome you all on my YouTube channel English Literature and Mathematics Expert. In the last video, we have discussed the Wordsworth theory of poetry according to Preface to Lyrical Ballad by Wordsworth and St. College. In that video, we have discussed the Wordsworth deviation from 18th century to 19th century, that why Wordsworth deviated from 18th century poetry to 19th century poetry and why he gave preference a rustic life. तो उसमें हमने 4 पॉइंट्स जो थे वो डिस्कस किए थे कि उसने अपना जो सब्जेक्ट है पोइट्री के लिए वो रस्टिक लाइफ या विलेजर लाइफ को क्यों लिया, उसने बोम्बेस्टिक लैंग्वेज की बजाय एक आम इंसान एक आम विलेजर वाली लाइफ को प्रेफरेंस क्यों दी, उसने बिग इंसिडेंट की बजाय एक स्मॉल इंसिडेंट पर पोइट्री क्यों की, और ये सब चीज़ें जो हैं वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग द रीजंस व्हाई वर्ड्सवर्थ गिव प्रेफरेंस अ स्मॉल सब्जेक्ट. एक स्मॉल सब्जेक्ट को प्रेफरेंस क्यों दी गई, एक रस्टिक लाइफ जो थी उसको प्रेफरेंस क्यों दी गई, स्मॉल इंसिडेंट बजाय बिग इंसिडेंट्स के स्मॉल इंसिडेंट्स को क्यों प्रेफरेंस दी गई, और क्यों उसने कहा कि लैंग्वेज शुड बी अ कॉमन एज rustic people are really spoken by a rustic people. And at the end, according to that video, उस वीडियो के हिसाब से ये वीडियो कंटिन्यू है एंड इट इज़ गोइंग टू बी द सेकंड पार्ट ऑफ दैट वीडियो. फर्स्ट वीडियो में हमने वो पढ़ा था, इन द सेकंड वीडियो इट इज़ आल्सो द थ्योरी ऑफ पोएट्री. इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग द रीजंस. The first reasons, the major reasons, the Wordsworth says that the fundamental passion of heart. हम ये चीज़ें फर्दर डिस्कस करेंगे. आई एम जस्ट गोइंग टू समराइज द 4 पॉइंट्स. ओके, तो वो कहता है कि फंडामेंटल पैशन ऑफ हार्ट जो होते हैं ये परवान चढ़ते हैं रस्टिक लाइफ में, विलेजर लाइफ में. बाय फंडामेंटल पैशन वी मीन दैट लव, डिटेस्ट, हेट्रेड, जेलिसी, हैप्पीनेस, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपके फंडामेंटल पैशन ऑफ हार्ट हैं. लिटरेचर या पोइट्री का मकसद ही आपकी सोल को सुकून देना है. तो फंडामेंटल पैशन ऑफ हार्ट जो हैं अगर वो प्योर नहीं होंगे, वो अगर आर्टिफिशियल होंगे तो किस तरह पोइट्री असर करेगी. तो फंडामेंटल पैशन वो कहता है कि अगर फंडामेंटल पैशन की बात की जाए तो ये फंडामेंटल पैशन जो है ये प्योरिटी अगर देखी जाए इन चीज़ों में तो ये हमें रस्टिक लाइफ में मिलती हैं, ये हमें विलेजर की लाइफ में मिलती हैं, क्योंकि इनमें आर्टिफिशियलिटी नहीं होती, दे आर रिप्लीट विद द नेचर. तो इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए उसने 4 पॉइंट डिस्कस किए दिए हैं. द फर्स्ट वन इज़ फ्रीडम. उसने कहा है देयर शुड बी अ फ्रीडम. और फ्रीडम कहाँ पे मिलती है हमें, वो देहात की ज़िंदगी में मिलती है, क्योंकि सिटी लाइफ में हम कन्फाइंड होते हैं, हम हर जगह पर पाबंद होते हैं, हमें उस किस्म की पाबंदी नहीं, आज़ादी नहीं मिलती जितनी हमें नेचर में मिलती है. वी विल फर्दर डिस्कस दिस थिंग. द सेकेंड इज़ सिंप्लिसिटी. अगर सिंपल लाइफ देखनी हो तो देहात की तरफ रुजू करें. देयर इज़ अ सिंप्लिसिटी, पीपल कीप देमसेल्व्स अवे फ्राम आर्टिफिशियलिटी, दे आर ऑब्लिवियन अबाउट द न्यू स्टाइल्स, के नए स्टाइल जो हैं शहरों में क्या चल रहे हैं, क्या नहीं हो रहा, क्या हो रहा है. दे आर सिंपल इन देमसेल्व्स, और वो अपनी ही लाइफ में खुश हैं और सिंप्लिसिटी को आगे रखते हुए. सेकेंड इज लैंग्वेज. विलेज के लोग जो होते हैं अपनी कॉमन लैंग्वेज यूज़ करते हैं. मकसद कॉमन लैंग्वेज ये है कि शहर वालों को कॉपी नहीं किया जाता. शहर में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नई नई लैंग्वेज सीखने के लिए क्यूरियस होते हैं, वो ख़ुद को तजस्सुस में डाल देते हैं कि ये लैंग्वेज सीखनी चाहिए, ये लैंग्वेज सीखनी चाहिए, ये लैंग्वेज सीखनी चाहिए. एंड द सेकंड इज़ नेचर इन्फ्लुएंस. नेचर का बहुत ज़्यादा असर होता है विलेज लाइफ पर. एक रस्टिक बंदा जो होता है, एक देहाती बंदा जो होता है, उसकी ज़िंदगी पर नेचर का बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है. तो ही डिस्कस्ड ऑल दीज पॉइंट्स ऑफ व्यू बाय कीपिंग इन फ्रंट ऑफ हिम दैट व्हाई ही प्रेफर रस्टिक लाइफ ओवर द एक जो न्यू क्लासिक्स की जो लाइफ थी, किचन वाली लाइफ थी, उसकी बनिस्बत उसने क्यों जो है रस्टिक लाइफ को डिस्कस किया है. ऑल दीज पॉइंट्स वी आर डिस्कसिंग इज़ अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ. ये कोई भी नहीं कह रहा, बल्कि वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड इन द थ्योरी ऑफ पोइट्री, उसने अपनी फिलॉसफी ऑफ नेचर में ये सब चीज़ें डिस्कस की हैं. तो उसने ये कंपैरेटिवली बात कर रहा है. इट डजंट मीन दैट देयर इज़ अ फ्रीडम इन द रस्टिक लाइफ में फ्रीडम है, सिंप्लिसिटी है, बट कंपैरेटिवली टू सिटी लाइफ ये चीज़ें जो हैं ये बेटर परवान चढ़ती हैं. और इन चीज़ों को हमने सामने रखते हुए इंसान के फंडामेंटल पैशन ऑफ हार्ट जो होते हैं, अगर ये प्योरिटी में ना हो तो हाउ दे कैन बी क्यूरियस, किस तरह ये पैशनेट होगी. अगर आपका हार्ट जो है ये पैशनेट नहीं होगा, अगर आपके हार्ट में पहले से ही आर्टिफिशियलिटी भर दी जाएगी तो वो नेचर कहाँ से आएगी. सो लेट अस डिस्कस फॉर दीज 4 पॉइंट.
So as earlier I have discussed with you the fundamental passion of hurt. Okay, the fundamental passion of hurt by Wordsworth mean that delight, jealousy, love, hatred, joys, and pleasure, and something like that. Okay, therefore he says that the village life offers best soil for the germination, growth, maturity, and something like that of the essential passion of the herd. Okay, where he says that while city life cannot provide us a rich soil, a fertile atmosphere for the germination of the fundamental passion of herd. ओके, देहात की ज़िंदगी में आपके फंडामेंटल पैशन ऑफ हर्ट जो है वो परवान चढ़ते हैं, जहाँ पे ये मिसाल देता है कि अगर एक बीज जो है उसको अगर एक फ़र्श पर उगाया जाए तो ऑब्वियसली वो नहीं होगा, तो वो सिटी लाइफ को कंपेयर करता है एज अ बैरन लैंड के साथ। तो इसी वजह से वो कहता है कि जब तक आपके पैशंस में, आपकी डिलाइटनेस में, आपकी जेलिसी में, लव में, हेट्रेड में प्योरिटी ही नहीं होगी, अगर आर्टिफिशियलिटी होगी तो वो किस तरह जो है आप पोइट्री को सब्जेक्ट बना सकेंगे। तो इसी वजह से वो कहता है, सो इन द 4 पॉइंट्स आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, वेयर ही सेज दैट इन 4 पॉइंट्स की वजूहात पर वो देहात की ज़िंदगी को सब्जेक्ट बनाता है। So the first point that I am going to discuss with you is freedom. He says that the rustic people, the villager people, they are free and under less restraint. वहाँ पर आज़ादी का माहौल होता है. There is a freedom comparatively to city life, where he says that city life is something like a confinement, like an imprisonment, like a captivity. ये कहता है कि ये एक कैज की तरह होती है. Okay, freedom in village life is as compared to city life is better than this. विलेज की लाइफ में आपको ज़्यादा आज़ादी का माहौल होता है कंपैरेटिवली टू सिटी लाइफ. ठीक है क्या? एज ही इन हिज पोएम प्रील्यूड ही सेज दैट टू नन मोर ग्रेटफुल देन टू मी, escaped from the vast city where long I had been a discontent sojourner, now free as a bird to settle where I will. ओके, जब ये प्रील्यूड में कहता है कि जब मैं लंदन में ये पढ़ने गया था एज एजुकेशन गेट करने के लिए वर्ड्सवर्थ, तो वो जब उस वहाँ से वापस आता है तो वो कहता है कि मैं इस तरह से लगता था एस्केप फ्रॉम द वास्ट सिटी, कि मैं अब वास्ट सिटी से एस्केप कर सकता हूँ. ठीक हो गया कि इस तरह से लग रहा था देयर वाज अ डिसकंटेंटेड, वहाँ पे बेचैनी थी. ओके, और उस लास्ट पीरियड में, सोजर्नर में, उन लास्ट दिनों में मैं अपने आप को एज ए इम्प्रिजनमेंट में फील कर रहा था. Now he says that free as a bird to settle where I will. इस तरह से आज़ाद हूँ जैसे कि एक परिंदा होता है और जहाँ चाहूँ मैं सेटल कर सकता हूँ. Okay, further as he expressed poem in London 1802, where he says that people lost the humanity, purity and nobility of their souls because they are corrupted by the artificial society in the cities and become immoral when they distance themselves from nature by living in cities. ओके, वो कहता है कि people जो है आर्टिफिशियलिटी में they lost the purity. If they lost the purity, they lost the humanity. If they lost the purity, they lost the nobility. Obviously, if they lost the purity, they obviously lost their characters, they lost their soul. Okay, और ये सब चीज़ें क्यों हैं? Because they are far away from the nature. इसकी सारी की सारी जो पोइट्री है वो इसकी फिलॉसफी ऑफ नेचर के सराउंड घूमती है. इसने नेचर को हर जगह पे प्रेफरेंस दी है. वेयर ही सेज दैट हर जगह पे नेचर को कहता है, वो अगर कहता है कि देहात के लोग अगर इसको अच्छे लगते हैं तो द बिग रीज़न फॉर दिस इज़ द विलेज, नेचर की वजह से ये उन लोगों को प्रेफरेंस देता है और सब्जेक्ट बनाना चाहता है विलेज लाइफ को. क्यों कहता है कि नेचर का जो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है लोगों पर. Further, he says that city life has many problems and limitations, therefore cannot provide pure fundamental passion of herd. Okay, and he says that village life is best soil, offers you a best soil because there is a freedom, simplicity, probability, far away from social and civil order. They are far away from artificiality. They are far away from hypocrisy. That is why village life proved fundamental passion of herd.
वहाँ पे सिटी लाइफ को कंपेयर करें विद कंपेयर, अगर हम सिटी लाइफ को कंपेयर करें विलेज लाइफ के साथ, तो वो कहता है कि वहाँ पे आर्टिफिशियलिटी होती है और आर्टिफिशियलिटी हर चीज़ की जड़ है। और ये जो नेचर होती है, इस नेचर का विलेजर्स जो हैं इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा असर होता है। दे आर फार अवे फ्राम द सोशल एंड सिविल आर्ट। Okay, so that is why their personalities, the talking about the personalities of the villagers, okay, वो कहता है since nature is a noble and they remain close to nature, ओके जैसे मैंने आपको बताया कि ये नेचर को बहुत ही ज़्यादा अगर प्रेफरेंस देता है विलेजर्स को, तो ये नेचर की बुनियाद पर देता है। वेयर ही सेज दैट नेचर इज़ अ नोबल एंड दे रिमेन क्लोज टू नेचर, सो नोबलिंग इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर over their personality, over their characters, and all these things purify their souls. Like a nature is beautiful, they themselves are beautiful. By beautiful here it means that the nobility, simplicity, using of simple language. So therefore he says that, so that is why their personalities are developed physically, mentally, psychologically, and as well. And they speak from the heart but not use much of oily tongue. इनके जो एक्सप्रेशन होते हैं ये टू द पॉइंट होते हैं। दे स्पीक बोल्ड एंड प्लेन, ये आर्टिफिशियलिटी नहीं शो करते। वो कहते हैं वट एवर दे से देयर एक्सप्रेशंस आर देयर इंटेंशंस, उनकी एक्सप्रेशन जो हैं वही इंटेंशन होते हैं। वाइल इफ़ वी कंपेयर दिस विलेज लाइफ टू द सिटी लाइफ, वो कहता है कि ये जो सिटी के लाइफ होते हैं इनके एक्सप्रेशन कुछ और होते हैं, दिल में कुछ और होता है और बाहर में कुछ और होता है। ओके, सो हेयर फर्दर ही सेज दैट दे आर एडवाइसफुल पोचर, एडवाइसफुल पीपल। तो वो कहता है कि ऐसे लोगों को शायरी का सब्जेक्ट ज़रूर बनाना चाहिए। ओके, दे बिहेव अकॉर्डिंग टू द प्राइमरी लॉज ऑफ नेचर। In Tinted Abbey, he says that nature did never betray the art that loved her. Nature ने कभी किसी को betray नहीं किया. Nature is not deceitful. Nature is not deceiving. So the peoples of the people of villagers are also not deceitful. The second point is simplicity. He says that villager peoples live away from artificiality. They don't know about fashion, style, and artificial way of living. Okay, they are away from social vanity and civil art. They are oblivion about the style, therefore simplicity over them. Okay, इस वजह से भी ये सब्जेक्ट बनाना चाहता है। So the third point is influence of nature. ओके, नेचर की इन्फ्लुएंस होती है इन चीज़ों पर। वो कहते हैं सिंस विलेजर्स लिव्स इन द कंपनी ऑफ नेचर्स, एज ए अर्लियर टोल्ड यू कि ही नेचर को बहुत ज़्यादा प्रेज कर रहा है, लिविंग क्लोजर टू नेचर एंड आवरली कम्युनिकेट टू द फॉर्म ऑफ नेचर। देयरफॉर नेचर हैज़ अ नोबलिंग इन्फ्लुएंस ओवर देयर कैरेक्टर्स, ऑक्यूपेशन, सोल, ओके, एंड ऑल दीज ट्रेट्स, all these characteristics purified their souls. Okay, their personalities, their occupations, okay, which nature possess, they themselves possess in these things. जो चीज़ नेचर खुद में रखती है तो ये भी उसके साथ क्लोज रह के इन चीज़ों पर अमल करने जाते हैं। देयर इज़ अ क्लोज टू नेचर, दे आर क्लोज टू नेचर, सो देयरफॉर नेचर हैज़ अ नोबली इन्फ्लुएंस ओवर देयर कैरेक्टर्स, पर्सनैलिटीज़, ऑक्यूपेशंस एंड समथिंग लाइक दैट। So the last point is language, where he says that language, villager peoples speak in plain words and express themselves without artificial touch of diction. They never use polished word, they never used oily tongue, they speak with plain words, okay, they speak with heart, not with head. There is a simplicity in their language. They ऐसी ज़ुबान यूज़ करते हैं जो उसका मकसद अगले समझने वाले को नेक्स्ट जो कम्युनिकेटर है उसको समझ आए। Their language is free from all artificial expressions, okay, and there is a directness in their expression. That is why they can easily communicate their feelings. I'm talking about their feelings with each other. Okay, and further he says that there is a less lie and much truth in their environment. They reveal more than they conceive. Okay, छुपाते कम और बताते ज़्यादा है। लैंग्वेज जो है ये सिंप्लिसिटी है। वो कहता है वही लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए जो इंसान को समझ आती है। कंपैरेटिवली स्पीकिंग, अगर हम
सिटी लाइफ में चले जाएं तो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर यूजिंग अ बोम्बास्टिक लैंग्वेज टू इन्हेंस देयर पर्सनैलिटी, टू शो आर्टिफिशियलिटी इन देयर कैरेक्टर। लेकिन ये चीज़ें देहात में आपको नहीं मिलेंगी। So these were the 4 points while keeping in front of him. I'm talking about Wordsworth. इन 4 पॉइंट्स को वो सामने रखते हुए वो कहता है कि इसी वजह से वो अपनी पोइट्री में विलेज लाइफ को सब्जेक्ट बनाना चाहता है, बिकॉज देयर इज़ अ फ्रीडम, द लैंग्वेज दे यूज़ टू स्पीक is as simple as they themselves, they have influence of nature over their personalities. ओके और उस नेचर की खूबसूरती की वजह से उन्होंने अपनी सोल को जो है प्योरीफाइड कर रखा है। ओके, सो दीज वर द क्वेश्चंस वट एवर आई हैव डिस्कस्ड विद यू, दिस इज आई हैव कॉपीड फ्रॉम प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड इन द थ्योरी ऑफ पोएट्री। ओके, एंड वट एवर वी डिड टॉक, ये कंपैरेटिवली स्पीकिंग था। ओके, सिटी लाइफ और विलेज लाइफ को अगर हम कंपेयर करें तो ये वाले पॉइंट्स आते हैं। इफ़ वी गो बियॉन्ड दीज लिमिटेशंस तो ये नेचर का इन्फ्लुएंस जितना भी हो, नेचर आल्सो हैज़ अ नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन लाइफ, लाइक वी हैव द नेचुरल डिज़ास्टर। तो नेचुरल डिज़ास्टर अगर नेचर के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं तो जिन लोगों पर नेचर का इन्फ्लुएंस है ऑब्वियसली उन लोगों के भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हो गए। तो ये सब जो डिस्कशन थी, दिस वाज कंपैरेटिवली स्पीकिंग टू द city life. Okay, so that's all from my side. So thanks for watching. Please wait for the upcoming